Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that today we are going to start a new unit and the name of our unit is State and Government. This is unit number 3. So my dear students, अब हम State and Government के बारे में पढ़ने लगे हैं. So इस unit में हम क्या पढ़ेंगे? Let's have a look. So the introduction of this unit is every person belongs to a state or a country. To run that state efficiently, it needs a government. The government manages the affairs of the state according to some set of rules and laws specifically. These laws are known as the constitution of a country. This unit will give you a rich concept about the state, government, constitution, and government formation. You will also learn how different people play their part in the government formation and state affairs. So my dear students, हर इंसान जो है वो एक मुल्क से या एक स्टेट से बिलोंग करता है और वहाँ जो है उस स्टेट को तरक्की के साथ चलाने के लिए, बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाती है. वो गवर्नमेंट जो है एफिशिएंटली जो है उस मुल्क को चलाती है. वहाँ पे मुख्तलिफ लॉज और रूल्स जो है उनको सेटअप करती है और इन्हीं लॉज और रूल्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. गवर्नमेंट कैसे बनती है, कौन लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, आप इस चैप्टर में इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे और बहुत बेहतर तरीके से जान जाएंगे इंशाल्लाह. So my dear students, now let's quickly have a look at the student learning outcomes of this chapter. These are all the student learning outcomes that will be covered in this chapter inshallah. ये टीचर्स और पेरेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमारा बच्चा जो है जब ये चैप्टर खत्म करेगा, ये यूनिट खत्म करेगा, तो वो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो समझ जाएगा. So my dear students, let's quickly start the introduction. So when we will start lecture number 1, the students will be able to define state and government, and they will also be able to differentiate between state and government. So my dear students, the page that is included is page number 34 of your social study book. और इस जैसे कि SLO से वाज़ेह है कि बच्चे जो है वो स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे और उनके दरमियान में डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे. देन इन लेक्चर नंबर 2 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे विल आल्सो बी एबल टू डिस्क्राइब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द पेज दैट इज इंक्लूडेड इज पेज नंबर 35 और इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे जो मुख्तलिफ एक गवर्नमेंट बनाती है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली आप उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप ये भी डिस्क्राइब कर सकेंगे. सो देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 3 and 4. सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजंस एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेक्चर नंबर 3 और 4 में सेम SLO हम पढ़ेंगे और जिसमें बच्चे अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानेंगे. द पेज दैट इज इंक्लूडेड इज पेज नंबर 36. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 5. So in this lecture, students will be able to describe the organs of government like legislature, executive, and judiciary. The page that is included is page number 37. So my dear students, then we will move forward towards lecture number 6 and students will be able to distinguish between rules and laws and how they help create a just and healthy political environment in a country. सो माय डियर स्टूडेंट्स, SLO बड़ा क्लियर है कि इसके बारे में आप रूल्स और लॉ को जो है वो अलग अलग कर सकेंगे, इनके दरमियान जो है डिस्टिंग्विश कर सकेंगे. इसके अलावा ये एक मुल्क को बनाने में कितने अहमियत के हामिल हैं आप इस बारे में भी जानेंगे. द पेज दैट इज इंक्लूडेड इज पेज नंबर 38. And then we will move forward towards lecture number 7, and in this lecture students will be able to describe the concept of democracy as the most popular system of government and explain why it is the preferred form. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक मुल्क के लिए जो सबसे बेहतर सिस्टम होता है दैट इज डेमोक्रेसी. और ये क्यों सबसे ज्यादा बेहतर होता है आप इस लेक्चर में इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे इंशाल्लाह. एंड द पेज दैट इज इंक्लूडेड इज पेज नंबर 39. सो देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 8 and students will be able to define the term leader and their qualities. So my dear students, the page that is included is page number 40 and then we will move forward towards lecture number 9, and in this lecture students will be able to define the term general elections. The page that is included is page number 41. यानी कि previous lecture में अगर आप एक leader के बारे में पढ़ेंगे, एक political leader कौन होता है, वो कैसे बनता है, then इस lecture में हम जो है वो elections के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, general elections क्या होते हैं, किस तरीके से करवाए जाते हैं. Then in lecture number 10, students will be able to describe the formation and function of political parties. How do they contest
elections according to their manifesto. So जनरल इलेक्शंस कैसे होते हैं, एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, वो कैसे फंक्शनल होती है, आप इस बारे में जानेंगे लेक्चर नंबर 10 में. The page that is included is page number 42. Then the last lecture, lecture number 11 is the review of this unit. इसमें जो है हम तमाम जो concepts हैं उसको एक दफा रिवाइज करेंगे, and I will provide you with an assessment sheet to evaluate you. So we will learn a lot of things from this unit. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.